Well, the big man is out there in the center, Virendra Sehwag. Take a look at that magnificent career. 185 matches, over 13,500 runs. वीरेंद्र सहवाग को आप अगर थोड़ी भी जगह दो तो उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। 4 रन होंगे ये, इसी की तो प्रतीक्षा करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा आप रूम दे दें और फिर आपको भुगतना पड़ता है। Again the ball of hand coming into play. It's a wonderful shot from Virendra Sehwag. You get more replays of that. That brings up the 100 as well. End of the over. Oh, what a shot that. He waits on most of the deliveries bowled to him, allows it to come right through into him and then runs it over the slip region. Not going to miss out on an opportunity. He's always looking to be inside out for most deliveries, and that one was way too short. Bang! And on the rise and on the up, Huda, well, is paying for the fact that he has been bowling for far too long. And someone like Sehwag, once he takes a liking to this sort of bowling, is not going to let him go. और रूम की भी जरूरत नहीं है, रूम तो खुद बना लेंगे वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर। Oh, lovely shot. The ease with which the bat flows and the ease with which the boundary was struck is not the ease with which his 53rd half century has come. और ये शॉट तो देखते ही बनती है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत जरूरी अर्धशतक। ओह, बढ़िया शॉट, लेकिन खेलने की कोशिश कहीं और किया था उन्होंने, लेकिन गई गेंद कहीं और, लेकिन नतीजा वही 4 रन। ये देखिए, ये हम बात कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग जब इस तरह के मूड में हो तो उस वक्त आप गेंदबाजी तो कम से कम नहीं करना चाहेंगे अमोल। If it's in my half, you're going over the top. Absolutely uncomplicated. That's the way he plays cricket. That's the way he has been playing cricket. Whether it's domestic cricket or international cricket, all alike. एक और बाउंड्री, टप्पा ऊपर डाला तो गेंदबाज के सर के ऊपर से, और टप्पे को थोड़ा छोटा रखा तो मिड विकेट में इतना खाली जगह मौजूद है कि उसका पूरा फायदा उठाएंगे सहवाग। नो बॉल और गेंद सर के ऊपर से 2 या 3 टप्पे पड़ के बाउंड्री के बाहर, और इसी के साथ 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई 5वीं विकेट के लिए। This time a little short and wide, and Virendra Sehwag is good enough. Just take another boundary. There's the moment, 100 for Virendra Sehwag. Back-to-back hundreds, and he's all smiles. He's thoroughly entertained a few people that have turned up, and 100 at this venue, Lali, will be very, very special. ऑफ स्टंप के बाहर जगह जरूर थी और दिशा दी गेंद को, थर्ड मैन के दिशा में 4 रन और एक और शतक। There you go, boom! Big relief after getting 100. Now the pressure's on the bowler. Oh, Virendra Sehwag, there you go. Bat for another couple of hours. We want that entertainment to go on and on. Beauty. Just like that. That's played through the cover region. Magnificent. Top quality there. He goes for it, and this time it's over the ropes. And that's his first 6 of the innings. Very surprising, but he's taken a long time coming, but it takes him to 145.
Yes, the short delivery has done the damage. Virendra Sehwag is gone. Well directed short delivery, hitting him on the glove, and a good catch by Nitin Saini behind the stumps. Had to leap upwards, and Sehwag is gone. छोटी गेंद, दिशा सही थी, बल्ले पे लगी, लेकिन जो एलिवेशन वीरेंद्र सहवाग चाहते थे वो नहीं मिली है वीरेंद्र सहवाग को। बेहतरीन पारी वीरेंद्र सहवाग द्वारा। आज रन नहीं बना पाए, लेकिन 147 बनाए उन्होंने, 278 पर 8।